I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well.
So let's go back to talking about the First World War and Flanders. It was a global war, and members of the British Indian Army served in all of the fields of conflict. And what I want to do is talk about, in particular, these three men who won, through their gallantry, won this highest possible honour that the British Empire could offer. And the first one is a chap called Khanadid Khan. He was the first Indian VC, as I mentioned, and he was born in 1888 in the Punjab. He was in the 129th Baluchis. Baluchistan, as you know, is a district part of India, and he was the first soldier of Indian origin to be awarded the Victoria Cross. He was a machine gunner in October 1914, and only a couple of months after this war had started. There he was with the Lahore Division in Flanders, and he ending up blocking an attack by the Germans, and he was one of 20,000 that were in the field at that time. This is what we now know as the First Battle of Ypres. There were 4 of these battles, and they were butchers, butcher shops. So he had charged at a village called Holubeka, where it was waterlogged because it was raining so much. They had insufficient hand grenades, there was barbed wire, and there were gaps in the line because of shortage of soldiers. And this is what the Lahore Division was doing. It was filling gaps that had been left as a result of the slaughter of the British regular army during the first couple of months of the war. In fact, the Baluchis were outnumbered 5-1 at this point, and Khanadid Khan, who was a sepoy there, he was helping to fill the gaps and helping to stop the German advance. So there was an attack. They were overrun by the Germans. He pretended to be dead. Everybody else was shot or bayoneted. He was there, and he after it got dark, he crawled back to their own lines. And this is what the citation for his Victoria Cross read. On the 31st of October 1914, at Holubek in Belgium, the British officer in charge of the detachment, having been wounded and another gun put out of action by a shell, Sepoy Khanadid, though himself wounded, remained working his gun until all other 5 other men in the gun detachment had been killed. So he was the last man standing. His bravery and that of his fellow Baluchis gave the Allies enough time for the British and independent Indian reinforcements to arrive and stop the German army from reaching vital ports on the Channel, which would have cut Belgium in half and would have been a severe blow to the war effort. He was treated for his wounds at a hospital in Brighton. He was taken back there, and the King came along and gave him his medal. He's commemorated also by a statue outside the Pakistan War Museum, Army Museum in Rawalpindi. And some of his descendants now live in Leeds. This goes back to our conversation previously about immigrants to this country and the debt that we owe. We owe debt to this man and to his family, and hopefully we're now repaying that in Leeds. The second hero was Jamada, that's Lieutenant Mir Dast. He was born in 1874 in the northwest frontier area of Pakistan. And at the age of 20, he joined the British Indian Army, and he was there as a regular in action in the northwest frontier and Waziristan. And he was brought over to Flanders in March 1915 as part of another large contingent of Indian soldiers filling the gaps. And he was, again, in the Lahore Division, and he was awarded his Victoria Cross for the second Battle of Ypres. They'd been ordered to counterattack in April, and despite the losses, Mir Dast and others managed to get close to the German trenches. And the Germans then released chlorine gas, and many soldiers either retreated or killed or were gassed, as indeed one of my grandfathers was.
he was the small number of British and Indian troops who stayed and held their position until nightfall when they were ordered to withdraw. His citation said, "For most conspicuous bravery and great ability at Ypres on 26th April 1915, when he led his platoon with great gallantry during the attack and afterwards, and collected various parties of the regiment." No British officers were left by this time. He was the sole officer, and kept them under his command until the retirement was ordered. Jemada Mir Dast subsequently, on this day, displayed remarkable courage in helping to carry 8 British and Indian officers into safety while exposed to very heavy fire. He also was wounded and went to Brighton, and then again the King visited him and presented him with his medal. And he died in 1945 in Peshawar. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
our third Pakistani hero from 1916 was Naik, that's a corporal, Shahmad Khan. He was a corporal at the time of this, but he later became a captain, and he served the 89th Punjabis. In fact, he was a Punjabi Muslim born in 1879 in Rawalpindi. And the 89th Punjabis were part of the 1st Battalion of the Baluchi Regiment. And his Victoria Cross was the most conspicuous bravery, this time in Mesopotamia, which is present-day Iraq. It was a world war. It wasn't just in Flanders. He was serving in Iraq, and he was in charge of a machine gun which was covering the gaps in the line very close to the enemy's trench. His citation says, he was in charge of a machine gun section in an exposed position in front of and covering a gap in our new line. That's worth saying. These citations are written by his commanding officer and somebody who knew what he had done. So there was the gap in our line within 150 yards of the enemy's entrenched position. He beat off 3 counterattacks and worked his guns single-handed after all his men, except for 2 belt fillers, had become casualties. For 3 hours, he held the gap under very heavy fire until it was made secure. When his gun was knocked out by hostile fire, he and his 2 belt fillers held their ground with rifles until ordered to withdraw. With 3 men sent to assist him, he then brought back his gun, ammunition, and 1 severely wounded man unable to walk. Finally, he himself returned and removed all remaining arms and equipment except for 2 shovels. But for his great gallantry and determination, our line must have been penetrated by the enemy. That is an incredible story, that he went back for everything except for 2 shovels. Unbelievable. He later achieved the rank of Subedar, which is the equivalent of a captain, and he died in 1947 in his ancestral village of Takhiti in Pakistan. These were the kind of heroes that the British Indian Army produced, and these are men who even today are remembered in the present day Pakistan Army. There were, as I said, there were 6 other Victoria Crosses awarded to the Indian Army and 2 to the Nepalese. The Nepalese Gurkhas and the Sikhs from the British Indian Army are part of the legends of the British Army, and they are hugely respected. And it is the actions of these kinds of men that led to that kind of respect. So, we had 1.3 million people from the subcontinent who took part in the war. Some of them were soldiers, some of them were labourers. And of those, some 74,000 were killed in various parts of the world. As I said, some of them with unknown graves. Theirs was sacrifice. When we come along to the Second World War, where even more people from South Asia took part, and it was even more of a global war. At the start of that war, there were 200,000 people in the British Indian Army. By the end of the war, there were 2.5 million. This was the biggest volunteer army the world has ever seen. Nobody forced these. They were not conscripted like so many other people in so many other parts of the world. They were not conscripted. They volunteered to serve and to fight. And again, we owe them a huge debt of gratitude. Although 87 were killed during that time, and there were another 18 Victoria Crosses and George Crosses awarded. The George Cross is the civilian equivalent of Victoria Cross, so somebody who's not actually in combat who won a George Cross, which is held in the same high regard as a Victoria Cross. So they served around the world. The 8th Army at Alamein. In fact, some members of the Indian Army were at Dunkirk and were evacuated in that first great coming together of the spirit of the British, which carried us through the war. They were at Dunkirk. They were in the 8th Army, then the 9th Army, the 10th Army, the 12th Army, the 14th Army in Burma. They served around the world, in Europe,
El Alamein in Africa, they served in right the way across Asia, places like Sudan, Iran, Iraq, Syria, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Borneo, Lebanon. Those were the places where the British Indian Army was serving, and these men helped to turn the tide of totalitarianism. Again, we owe them a huge debt of gratitude. So, in summing up, I went, as we often do, to poets who can crystallise our remembrance after death. And that includes those more than 160,000 from South Asia who died in 2 world wars. So Muhammad Iqbal from Pakistan, whose poetry in the Urdu language is considered amongst the greatest of the 20th century, wrote one of his most famous poems. Man's spirit does not know annihilation. It may disappear from sight, but is not obliterated. The apparel of existence is turned to ashes by the flames of grief. This fire is put out by the water of that pleasant feeling. Ah, the suppression of lamentation is not the silence of indifference. It is awareness that brings consolation, not forgetfulness. So many paid the ultimate price of war. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. This has been Yesterday, Today and Tomorrow on South Asia Global Television. I'm Robin Ashby, and I look forward to speaking to you in the next programme. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया। इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है
और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ा है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तालीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Come on, turn your radio on, it's Friday.
It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतनी कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने यह शेर मौजू किया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी। मामला जब अदालत तक जा पहुंचा और वहां हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहाँ मस्जिद तामीर करना चाहते थे। इस मौके पर मुसलमानों के वकील ने इन्हें तजवीज़ दी कि अगर वो यहाँ सुबह फजर से पहले मस्जिद तामीर कर लेते हैं तो केस का फैसला इनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था इसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अदालत ने भी मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरला के रकबा पर तामीर है। दर्ज वाला कथा तो इस रवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चलती आ रही है और ज़बान ज़दे आम है, यानी हर एक ने ज़ेब दास्तान के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें इजाफा किया। असल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। नकूश लाहौर नंबर में इस मस्जिद की तामीर का मामला कुछ इस तरह दर्ज है। दा में यहाँ पर एक कच्चा सा चबूतरा था जिस पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इसके करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर
हुआ। मुसलमानों को मस्जिद पुख्ता करने का ख्याल आया तो हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम फसाद के पेश नज़र इसकी इजाज़त न दी। मई 1922 में एक रोज़ पुरजोश नौजवानों ने आपस में मशवरा करके रात में यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। वो इशा की नमाज के बाद काम पर लगे और फजर की नमाज के बाद फारिग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ। उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी कि जो सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके नमाज क्यों अदा की है, और वो इसमें यानी मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त हुआ। हिंदू ये कहने लगे हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का सिर्फ एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और सिर्फ इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में जो है ना तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक चली गई। तो उस वक्त की अदालत के जो जज साहब हैं उनने कहा कि मैं सुबह जगह का मुआयना करके फिर उसके बाद इसके हक़ में फ़ैसला दूँगा। तो जब सुबह जज ने मुआयने के लिए आना था तो मुसलमानों के जो वकील थे उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर आप रातों रात इस मस्जिद को तामीर कर दें तो हो सकता है ये फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। तो मुसलमानों ने जो आपस में मशावरत की और मशावरत करने के बाद जो है ना फिर उनने ये तय किया कि हम गामा पहलवान से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अगर वो हमारी सरपरस्ती करें तो हम एक रात में मस्जिद बना सकते हैं। तो हिंदुओं की चूँकि यहाँ पे अक्सरियत थी, उनका जो है ना लड़ाई झगड़े का भी खौफ था, ख़दशा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो फिर जब गामा पहलवान के पास मुसलमानों के जो है ना एक वफ़द गया और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारी निगरानी करें, तो हम जो है ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और सुबह इस तरह जज ने आना है और फ़ैसला होना है इसके हक़ में। तो उस गामा पहलवान ने ये कहा कि जो है ना उन्हें जो है ना हामी भर ली और जो है ना वो तशरीफ़ ले आए और वो शालमी चौक में आके वो बैठे और जो है ना बहुत सारे मुसलमान फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मस्जिद को तामीर करना शुरू कर दिया। और जब सुबह फजर की नमाज अज़ान का टाइम था तो उस वक़्त तक जो है ना मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर लिया गया था। तो फिर जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त जो है ना हिंदू आए तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है और मुसलमान तो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदुओं ने एक दूसरे को इकट्ठा करके बुलाया हुआ था। कुछ हिंदू तो ये देख के ही वापस चले गए कि भाई ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है, मुसलमान नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे हिंदुओं से जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आपने हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया। तो वो आपस में यानी उनको ये कहकर वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो जज ने फिर आके क्या देखा कि ये इमारत पहले से तामीर शुदा है, तो जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद तामीर कर दी है, तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। और इस मस्जिद को जो है ना 1917 में बनी, फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपेयर किया जाता रहता है। 1354 हिजरी में इसको दोबारा रिपेयर किया गया। फिर तीसरी बार 2007 में इसके जो लेंटर थे वो पोसीदा हो गए थे और इसको जो है ना फिर 2007 में मेरे सामने जो है ना इसको फिर दोबारा तीसरी बार रिपेयर किया गया। इसी तरह जो वक्तन मस्जिद का जो काम निकलता रहता है तो वो काम होता रहता है। और इस मस्जिद को आज भी जो है ना लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना एक सादत समझते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि एक रात में मुसलमानों ने कैसी मस्जिद को तामीर किया। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जिन्नात ने शायद तामीर की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगरचे अल्लाह ताला की
मदद शामिल हाल हो तो ये तो बहुत छोटी सी इमारत थी, बहुत बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें भी अल्लाह ताला की मदद से बनाई जा सकती हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। मेरा नाम फराज नकवी है। मैं यहाँ पे ऑफिस के काम आया था, तो साथ ही मिज़ान बैंक है, तो ये मस्जिद थी। मैंने बड़ा सुना था इनके बारे कि ये मस्जिद मतलब एक रात में बनी है, तो बड़ी क़ीदत थी मुझे कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। हम पहले ना जज्बा कुछ और होता था, पहले मुसलमान थे वो उनका जज्बा और था, आज भी वैसा ही आ रहा है माशाल्लाह। अच्छी मस्जिद है, मेरी एक ख्वाहिश पूरी होगी कि मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। सर मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं बाजोड़ की रिहायशी हूँ। तकरीबन 2010-11 से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस नमाज में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आता हूँ। कारी साहब जानते हैं हमें, तो हमें बहुत सुकून महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं। जो मुसलमानों का उस टाइम का जज्बा है और आज का जज्बा है, तो अंदाजे मुताबिक मुझे लगता है कि आज भी ज़िंदा है वो वाला। ये एक रात का मस्जिद है, तो उस टाइम तो हम थे नहीं, लेकिन सुना है कि यार एक रात में बना हुआ है मस्जिद। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो बहुत सुकून महसूस होते हैं। अक्सरली मैं काम करता हूँ, बार होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस मस्जिद में पहुँचूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरा नाम एजाज़ अहमद है जी। मैं यहाँ पे तकरीबन 1970 से दुकान कर रहा हूँ। और ये शब की मस्जिद जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना था बरसों नवाजी बन ना सका। बहरहाल ये मस्जिद बहुत पुरानी है। और उसका सामने ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये मोती मंदिर है, इंदिरा गांधी का दादा का, नेहरू का मंदिर था। और मस्जिद जो थी वो इसके मुकाबले में बनी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो रातों रात ही तकरीबन 24 घंटों में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है ये। और अब आज आपने भी देख लिया है, और मस्जिद उसी हालत में जैसे पुरानी पहले थी वैसी की वैसी मस्जिद आज भी वैसी की वैसे ही है। यहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, हिंदुओं की हुकूमत थी। यहाँ पे ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर था, और मंदिर के सामने जो है ना जगह थी एक, वहाँ पे अपना गामा पहलवान था। और यहाँ से कहते थे कि मस्जिद जब बनाई गई है ना रात को शुरू की है 4 बजे इशा के बाद शुरू हुई है, और सुबह अज़ानों के फजर की नमाज जब हुई है ना तो मस्जिद तैयार हो गई थी। लोहारी यहाँ से लेकर ना तो अपना दिल्ली दरवाजा तक ईंटों की लाइन लगी हुई थी लोगों की। उन्होंने पत्थर ला के एकदम मतलब रातों रात मस्जिद बनाई थी ये। और एक रात में ये मस्जिद सुबह उन्होंने मुआयना करना था, अंग्रेज़ ने आकर मुआयना करना था, डाला ने आकर मुआयना करना था कि ये मस्जिद यहाँ पे जगह है कि नहीं। सुबह आई तो देखा तो हाँ मस्जिद की जगह मौजूद थी, मस्जिद बनी हुई थी उस वक्त। उसने फिर डिक्लेयर किया था कि हाँ मस्जिद ठीक है, मस्जिद की जगह ठीक है। मेरा नाम जी शहजाद अब्दुल हमीद है जी, और मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ, रहायशी हूँ। जद्दी पुश्ती लोग हैं, हम इधर के रहने वाले। तो ये जो मस्जिद है, आप इसके बारे में मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने जो बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तारीख़ी मस्जिद है। असल में ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सारे लोग ये इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये मुसलमानों ने कहा कि ये मस्जिद है, हिंदू कहते थे ये मंदिर है। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अल्लामा इकबाल साहब थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब थे, वो वकील थे। तो उन लोगों की मुशावरत से और लोगों की मुशावरत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुबह आकर देखेंगे ये क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या सिलसिला है। तो मुसलमानों में आपको पता ही है क्या जज्बा होता है। ये आपने जब इस्लाम की बात पे आता है तो
तो वो अल्लाह के हुक्म से फिर और बन जाता है मसला। तो फिर लोगों ने यकदम अल्लाह की मदद से एक रात में खड़ी हो गई थी। ये तरीकी बात है, ये भी ये मस्जिद शब्बर एक रात वाली मशहूर है पूरी वर्ल्ड में। इधर से बड़े बड़े सयाह आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। मैं इधर मेरा काम है ये कबाड़ वगैरह का, तो मुझे 25 साल से ऊपर हो गए इस चौक में, 25 साल से ऊपर मुझे हो गया। तो बाप दादा ने बताया, तरीक ने बताया, ये एक तरीकी मस्जिद है, अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है। तो खुदा की मदद से उस वक़्त के लोगों ने ईमान था, जज्बा था, उस वजह से ये एक रात में तमीर हो गई है। इस वजह से इसको एक मस्जिद शब्बर अल मशहूर एक रात वाली मस्जिद शालमी चौक कहते हैं। मट्टी और गारे का दौर था, वो मट्टी और गारे के ज़रिए उन्होंने ये इसको तमीर कर दिया अल्लाह पाक की रहमत से, नबी पाक के सदक़े। तो ये ना मतलब कि खड़ी हो गई। सुबह आके देखा जब गवर्नमेंट ने, तो ये मस्जिद थी, फजर के अज़ान इन्होंने दे दी मुसलमानों ने। तो जैसे हिंदू पहले सोए रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से वे सोए हुए थे। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better.
Where it's legal or where it's contract, take your time. Hello again, Alan Curry here with Badge of Honour, and the last episodes I've been trying to take you through my career, some of the feelings, how you progress, and maybe some stories that I've been involved with for, well, we're going to say for better or worse, but actually for better. Success has 1,000 fathers, don't forget. So as I progressed through for some of the things I've said earlier, and as I improved or worked through the ranks, obviously the responsibilities and the work you got involved with changes, as does the requirements of the role. And quite obviously I did a number of training courses, but I remember, I mentioned the last time some of the dark humour with the dog, but we also, one of our stations was at a local coastal resort at Tynemouth, and we had a very, very vibrant licensing trade at the time. And a major establishment within that location was a hotel called the Rex Hotel. Now it was vibrant, I mean vibrant, every night till 2 o'clock in the morning. But through intelligence and other information, we realised, and sadly this does tend to occur with late night establishments, maybe not as regular now, but it definitely did then, of drug dealing and taking. The thing about dealing with large premises like that, the first step is to maximise the intelligence and gather the evidence. And we did that by using officers who would go undercover in plain clothes, generally younger officers, which gives its own little risk because they're not as experienced, but the younger officers are the ones who can fit in much easier. It's not really going to be my scene now to be in a nightclub trying to buy drugs, because I would stand out like a sore thumb, being a little bit more mature. So we send some of our younger male and female officers in. They buy drugs, they locate where the drug taking or dealing is taking place, and as a consequence we would end up purchasing from different people on a period of time to build up the evidence against them. We would identify who they are, and then ultimately, and the big thing about these type of operations are keeping them secret, because if you have a lot of police officers involved, sadly, intentionally or otherwise, and generally otherwise, sometimes the information gets spread around and gets out from the station, so it has to be kept very, very tight. Only a small number of people know exactly what's going on. And when I say the younger officers, we don't just send them into these places. They're dropped off. We have what we call welfare officers. They're picked up, they're taken home, they have to make their statements, they're debriefed. So we don't just send them in and say, buy a few drugs. There's a lot of work and effort and time goes into building up the case against the individuals. And the next step, of course, within this is we have to raid the premises. And still to date, my information is it's still the largest raid that the Northumbria Police actually have participated in. We had 3 removal wagons, because what we do is we put our senior officers, and I say senior as experienced public order officers in. We need to pull up quickly. You've got to get in quickly. You've got to arrest people quickly, because if you don't, they have the opportunity to dispose of the drugs, they have the opportunity to run away. And behind them was 30 vans of either police officers, dog handlers, evidence gatherers, and of course within all of this, you've got to keep it secret. Now,
if you've ever done any public speaking, and it would appear I'm doing some of it now, addressing 150 police officers is actually quite an interesting way of telling people, because up to that time nobody knows where they're going. And I always remember one of the handlers who was good at doing all this undercover work saying to me, I don't know how you managed to stand up there and talk to all these police officers. I couldn't do it. But on the same token, I did say to the individual who was the top surveillance officer, there's no way I could do what he did. So quite obviously, horses for courses. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? इसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर दिखा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। And one of the things we did then, and I'm not telling any state secrets because the world's moved on, we would get, I think we had £1,000 in 10, £20 notes to give to our surveillance officers to buy drugs on the night in question. But what we did was we put them through the fax machine, we photographed them, and as a consequence, shall we say for argument's sake, at 10 p.m. those notes were in our possession, the fax was time and dated. As a consequence, we knew that those serial numbered £20 notes were in our possession at 10 o'clock. Then the undercover officers would buy drugs off the individuals, and when we arrest them, hopefully, they would be in their possession. So the link is how we purchased the drugs, and again, we're gathering evidence. And that's exactly what happened on the night in question. We raided the premises. The drug dealers, there were 6 of them in all, were taken into custody. We had all of the evidence, and ultimately they all got 3 to 5 years for drug dealing, and we managed to clean up the location. We closed the premises down. It was no longer able to trade. The people who had the place sold it to somewhere else, and it became a top hotel. So from dealing with issues that were of concern to members of the public, to gathering the evidence, to arresting the people, and actually making the locality a better place, that probably took us about 10 weeks to get from beginning to end, with a lot of resources, a lot of planning, but ultimately a very good success story. And you learn from those particular things, because once you've done it once, you may know how to do it again. Because the next step of moving into these things is what we call planning, pre-planning, to be perfectly honest. When we're talking about firearms incidents, there are 2 types of firearms incidents. One which is they call a spontaneous, because at any given time around the country, each force will have armed officers on patrol. And there'll be a situation arises where the necessity would appear for an armed officer to attend.
there's no time to think about it. You're going to where the call came in from. But the other ones are what we call pre-planned, where we have the ability to think about what we're doing. So there's a mixture here of spontaneous and pre-planned with the next situation I'm going to speak to you about. You may be conversant with the traders Costco. We have one in Gateshead. There was 3 people in a car pulled up, security van was loading the money, had their guns with them, not the security people, the criminals, threatened the men with the money, took the money and drove off, and they were being pursued. As they drove off, they managed to hit the curb with their car wheel, and as a consequence couldn't go any further. So they ran into a line of waiting traffic. Now we've got the situation when I'm saying this is a spontaneous response. Firearms officers are on the way, right? We've had no time to think about it, no time to plan it. We're on the way to try and see if we can apprehend these offenders. What they did was they went to a car in the line of traffic where a lady was driving, pointed the gun at her, got her out the car and drove off in her car. Unbeknown to them, but it was known to them once they got in the car, she had her baby in the back of the car in the child seat. So they drove off to a nearby locality. On the way, they threatened 2 of my police officers with guns, and one of whom was driving a Panda at the time. And I always remember his words when he said to us, he said, "You know, boss, it's not like Dirty Harry, I couldn't get reversed quick enough. When there's somebody pointing a gun at you." Anyway, these 3 offenders eventually dumped the car with the baby in, ran off and got away. Now, we've got a number of crime scenes. We've got the crime scene where the van was raided, we've got their own car, we've got the baby's car, it was a busy night. Now we've got a situation, and what are we going to do? Well, first thing is we needed to put an incident room together with some of our CID officers. We needed to gather intelligence, we needed to identify who we thought the offenders were. And as a consequence, we had 3 and 4 addresses at a locality in my area where we believed they may be. So then, with a firearms team, I don't want the front, believe it or not, but I have to be there and devise a plan for entering these premises. And ultimately, in the space of 24 hours, we went into 4 houses with firearms teams, and we were successful with one individual. The second one, his girlfriend rang up and said, he's going to give himself up because you're not breaking into my house the way you've broke into theirs. And then we found the third one. Subsequently, the 2 offenders who we arrested initially, they received 14 years imprisonment each. It's me, Gia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
third one, we couldn't actually prove he was there. We didn't have enough evidence. So he was released. I don't know whether this is good or bad, but 2 years later, he was in a locality in Newcastle upon Tyne and he was stabbed and murdered. So, bottom line was, we went through a spontaneous situation, we went to a pre-planned situation, we had a successful outcome, and my officers who were threatened managed not to have any subsequent bad feelings or situations that caused them nightmares, dare I say. Well, bottom line is, for me, and hopefully still today, you can't point guns at police officers and you think you're going to get away with it. Of course, with other firearms situations, I did a couple where we pre-planned with what we call an armed surveillance, right? So this time I've got armed police officers with surveillance officers, and this referred to a situation where there was a bank robbery in a place called Wrighton, and they actually went through the roof of Lloyd's Bank, threatened the, obviously, cashiers and everything, took the money and ran. And of course we sealed the place off, we looked after them, but ultimately we couldn't find who they were. But for whatever reason, one of them had left a gun cartridge on the roof. And as a consequence of scientific evidence and forensic evidence, we were managed to get some DNA, which identified the person who had handled it to be a known armed robber. Now, he lived in a location in Fenham, Newcastle. But our situation then was, because he was dangerous, we didn't want to go breaking into his house. As a consequence, we needed to make sure it was safe for the officers, it was safe for the individual, and safe for members of the public. So I spent 3 days in a car watching this house, not me personally, but nearby. And I joke, and I do with my friends, he must have been the most boring bank robber in the world because he never came out the house for 3 days. And then he came out the house and went to a local hospital. And would you believe what had happened was his wife had fallen down the stairs, broke her ankle, and he had to take her to the local hospital, which was fine for us because now we've got everybody in place to deal with the situation. And he was subsequently arrested and he went to prison for 20 years. So these are all things that we'd like to say were success stories, because successful from a policing point of view, but also successful from a public point of view. The more of these people we remove from the street, the safer it is. So hopefully I've tried to explain from right at the very beginning on the previous episode about your emotions as a 19-year-old, as a PC dealing with grief and aspects of low-level crime, to actually as a senior officer dealing with some of the worst offenders in society and how you deal with it. And of course, you learn, you like success. Not everything's successful, but that's where planning, intelligence, professionalism, your training, they all come to play in mine. And of course, you've got to remember that at that time, I'm the leader. I'm the manager, I'm the leader. People look up to you. So all those pressures are on the leader to hopefully be successful and do things properly. I always think, if you look at Napoleon, I think he was on about his generals, didn't he, when he said, is he a good general or is he a lucky general? Because he wanted lucky generals. But I'd like to think I wasn't a bad general, but I may have been lucky as well. And there's another chap I quite like listening to, well, he's sadly not with us now, Colonel David Hackworth, who was a very senior officer in the military in America. And one of his philosophies was, always have a go to hell plan. So there is always a situation where you plan, but you've got to remember that things can go wrong and how do you deal with them at the moment. And sometimes a number of spontaneous situations have to be dealt with spontaneously. So the last thing I would say for this episode would be, the thing that helps the police, and I'm sure this is the same in any country, is members of the public supporting, reporting, finding things that were out of place. You know, I mean, we are nationally and internationally an emergency service. You talk to the police, you don't go to the police to generally ring somebody up and say, can you talk to me? All one or two do. It's because there's an issue in your personal life, or something you've seen that's not right, or something you worry about in relation to society. And as a consequence, the biggest ears and eyes that we have as police officers are members of the public. So I would always say, and I'm saying this probably nationally and internationally, never ever be frightened to ring the police. If you ring the police, we know it's because you've got a concern. We may have the answer, we may not have the answer,
but you'll never know unless you contact us to find out. And there can never be too many calls of people considering issues of criminality or things going wrong where you need the police to help you out. Anyway, I think that's all for this episode. I should probably be back in the next episode. So thank you very much. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती, आपका मंशूर क्या है। किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Pies. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ायका होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here
and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting now. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है।
I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
Hello, Terence South again, speaking in the line of duty. We've moved now from the Falklands, conflicts, Northern Ireland, and we're out of the army and you're on your own, taking jobs on, basically contracting wherever they come, because confidence really, and what the armies give you to be able to sort problems out. So I was invited to a one-year post in China for the building of the Guangzhou and the Ring Road. That was a real good project. So we're building an elevated road in the middle of a Chinese city with all the problems that comes with it. So what came with it was, I wasn't the first guy to run the job. I was the second guy. So I was following on from someone else who wasn't a military guy, wasn't disciplined in the same way. And so as soon as I got there, it's like, I need to change things. And the problem with developing cultures is they learn one way to do things and that's it. Change management, not an easy thing. There's a lot of things to be learned about change management, and the cultural aspect is one thing that was absolutely massive, because the way you would do it in the UK is not necessarily the way you would do it in China or in Japan. I've known guys from companies like Ford who've worked in Japan, they've worked in Korea, they've set whole factories, multi-million-pound projects up, and they come to China and it's like, start again. I started again when I went to Korea, I'll start again when I come to China, and they've got to learn about the culture, and one way to learn about the culture is learn the language. And that was one thing I was adamant about, and that to understand those people and be able to communicate, you need to speak the language, or at least understand it. Because believe it or not, you might be the most senior engineer in the world, but you are not in control if you have an interpreter. The interpreter is in control, because how they interpret things is to their benefit, not necessarily the project's benefit. And I'll give my analogy now. When I worked in Russia in about 96, 97, we had an interpreter called Sergey, and it was a case of, Sergey, on a weekend, we want all the materials brought to site, we move the traffic management, and that makes everything aligned. We don't want to move the traffic management and the materials arrive. We want it all to happen at one time, so we don't have materials in the middle of the road. You can imagine if you've got cars here, you fix the road, you're going to move the cars there tomorrow, and you've got all your material here, you've got to lug it all across. It's no good. So nothing ever happened on time. And I couldn't understand it, I've told you, and this wagon's late. And one day we had a guy who could speak a little English, and he told us, well, what's your problem? I've delivered it as required. No, we wanted it yesterday. No, today. So we went to Sergey. Well, yeah. And he waffled and he went on and on and on. And then I was sat in a meeting in the UK, and this man's being paid by the day. So if he makes the project last longer, he benefits. But the company lose absolute thousands while he makes a few more rubles. Absolutely ridiculous. You must have someone who understands the local culture and the local language and on your side.
That's for one, but you've got to be able to speak the language yourself, even if you've got that. That just speeds things up. You can throw out, this is what I want, blah, 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 and they put the full stops and the commas in and put it right. Because that was one problem. The guy was an interpreter, he's paid by the day. We were paid on the project, one lump price. He was wasting, he was throwing our money away. We were hemorrhaging money because of him. But we had to sort that out. So that's one thing about learning the language. And the other thing is that I'm in China, I've done the Guangzhou in the Ring Road, we've gone and we've done really well, we've gone and done Guangzhou and Donglu. Job's finished, I'm speaking Chinese, I moved to another job up in Nanjing. So I get to be a regular in Shanghai, and this guy just pulls me one day. Terence, you speak Chinese? Yep. I'll give you a job for one day. Sorry, what do you want us to do? So I want you to come and listen in one of my meetings and be my friend. So, all right, yeah, I'll do that. I'll send a car to pick you up. Okay. So I needed to go to the inner city airport for to get picked up. So in the inner city airport with a bag, this guy thought I'd go off a plane, but I hadn't. So I get picked up. This is my friend Terence. He's just flown in. We've been friends for years. He's looking at setting a company up in China, and he's just sitting here to see how interpreters work and things work. At my age, late 50s, it was unexpected that this man would speak or understand Chinese, because it's very much the young people that took it on. And so I'm sat there and conversations going on, and he's taking a floor in a building, and what he's doing is he is organising it, and he's putting where he's putting the desks, how much furniture do we need, where does he need the fire escapes, where does he need all these things. And the plan's there, it's all been priced, it's all done. And he throws a spanner in the works in the last meeting, and he says, I'd like a door here, so we can shortcut through there if needed. Oh, and so I've got the builder, I've got the interpreter, I've got me sat there, so no. And then I hears from the interpreter, how much do I get for that? What's my percentage? How much are you going to charge him? I want more than that. What? So I'm just listening, dumb old man. Sat there, yeah. Ooh. Well, comes out of the meeting, everybody disappears into their office, and I says, oh, thank you very much for your time, I'm off. Oh, right, I'll see you about. And he's like, what? I'll see you later. Goes out, gives him a text, I need to meet you at the pub. So I met him in the same pub. It was a Banana Leaf in the middle of Shanghai. Yeah, what do you want? What's up? I said, I can't talk about it in the office. I said, but your interpreter is actually stealing from you. What? No, she's been with the company years. He says, look, I'm telling you, this is what was said. She asked the contractor what percentage I get. She said, I want more than that. Oh, no, this is negotiation. No, mate. This is what was said. You've paid me to interpret. That's it. Oh, okay. I said, I'm adamant. That is what was said. I said, it's not local language. This is Mandarin. It's okay, Terence. So anyway, he disappears back to his office in Australia. And I get another call from a guy who'd been in that office a lot of years before. Terence, you've said this. Yeah. I think you're right. Wow. Yeah, we got costings that went up and up and up, blah, blah, blah. So I just got left out of it. The lady who actually was responsible was found to have a very wealthy lifestyle, well above what she could afford and her husband could afford. So working in foreign countries and doing things and learning the language is a whole sort of learning process. You've really got to be aware of who your friends are. You've really got to be careful with that. People who befriend you, always keep your wits about you, because a number of times I've been and I've listened to what's being said, and it's not what was translated. So it's difficult. It is. But China is absolutely terrific place to live. And as an older man, during those years, I got a lot of respect, basically because of my age and because of the fact that I'd learnt the language. And that's one of the problems where you get culture now. Culture comes into it where
you've got one child in a family quite spoiled, yeah, because the parents dote on it, and then they do everything to help them, and you've got this ability to talk to people, and when you've got these young people coming in, some of the jobs you give them, they feel that they're below them because they've been to university, they've got a degree, but they've got no life experience, and they've got no knowledge of how your industry works. They have a degree which says basically you have the tools to start in this industry, but you need to find out how it works and gain some experience. And I'll give you a story in that we were building these parts for bridges, and we fabricated them, and before very long we were copied. And so it's right, get out the market, what's the strategy? I said the strategy is dump that part in the market, we go into making and assembling and we send them abroad. We leave the Chinese market alone other than the really big kit. Yeah, let's go with that. It's a route out of the problem we've got. Because now we're in an overcrowded marketplace, we can't get our price. Our price has got to drop, which we're not going to do. But the Chinese have come in and our price is here, their price used to be there. They've copied some of what we do. Their price is now just below us. And they're saying it's the same thing. Right, okay, bang, we left the market. So anyway, time goes on, we start making modular things. They go to Germany, they go to Turkey, they go to Russia, they go all over Europe. And we've got the business model now sorted. And that was my job for the company I went to work for. Resolve the problems in the factory with regards to quality and help us with the business plan. So did that. So I'm there for 3 years. I'm coming towards the end of year 2.5. And I've got this in place. We're modularising. We've left the Chinese market alone. There's a huge earthquake in the west of China. You've got bridges collapsing, you've got buildings falling down, you've got a lot of things happening that should never have happened because poor quality, copied, didn't fully understand the engineering behind this piece that we used to make. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं।
शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. So the government comes in and says, right, we now need you to do this because the ones that's got your pieces in haven't had the same results and fall down and etc. And it's like, no, we're out of that market. We're finished. So what I'm saying is, when you go into developing markets as a Western company, you will be copied. But the full technology, they don't understand. We had some seams in the steelwork that we just put a nice little weld along the top, which actually was only there to keep the water out, so the thing became watertight. But what the Chinese had done is they'd fully welded it and said, isn't ours better than theirs? Theirs is only little, ours is huge. But ours was there, so when an earthquake come, everything snapped and it just broke up. And you could put the thing back together. But the Chinese didn't. They kept the whole of the structure bonded together and the structure fell over instead of all the bits going, right, now you can put them back together and you get the safety traffic across a bridge, across a structure. We can make it work again and we don't have these huge costs in rebuilding. So copying is really dangerous, and it's something when you come into business plans and developing countries you've really got to be aware of. And so with experience like that, I ended up being poached from there before the end of the 3 years. My job was done, everything was running. The most expensive thing at the end of the day in that Chinese factory was me. The factory was running, there was no problems, it was time to get rid of me. And when I made this public, I ended up being poached by an international company and asked to go out to Mongolia to work. And so it was like, yeah, I'll go out to Mongolia. What? Yeah, no problem, just give us a ring. Yeah, so they told me to, as soon as finishing could be done and I could extract myself from the company, they would take me on and send me out to Mongolia. So we agreed a package, I left,
I kept my Chinese email address so people could write to me and I could send email back. So the way I extracted myself from the company was also something that I learned in management, in that if I in China had said, I'm leaving, there would have been a void and I would have created a hole. And what happens when somebody leaves, everybody tries to fill it, and they fill it with the most awful things like, he promised this, he promised that, he said this, he said that. That's not the way we interpreted. The way we interpreted that was in this way to benefit themselves, whether that be within your own company or whether that be in a company you're cooperating with. So when you extract yourself from a company, it's got to be on the best of terms and it's got to be in a controlled manner. So what I actually did, I said, right, I'll move out with all my email addresses and all my emails will go to one person in the parent company and he can tell me what I've got to send back. And in that way, I'd gone into a company, I'd help sort it out, I'd help align it with quality, business plan, structure, and the separation of a joint venture into a wholly owned company. And I'd come out, nobody even knew I'd left. Nobody knew I'd gone. It was like, he's been away 2 weeks. Oh, he's gone to, I think they said I was in the Philippines. So I was in the Philippines. Where's he gone now? I think he's in Australia. And I went all these different places in theory. But in practice, I was working for another company in Outer Mongolia, sending emails round with people that didn't jump in that void and create problems which were costly to the company. So nowadays when I see people leaving companies, I'm disappointed in that professional people can leave a company and as a result leave a void behind. And if you go back to the recent conflicts like Gaddafi, as soon as you pull that guy out, vacuum. Everybody's got to fill it, everybody wants to be part of it, everybody sees it as somehow to make money. And so management change is something which is very subtle. It's not something that's a big, this is how you do it. It's very subtle. You move people around in a very quiet manner. And in the same way as when I went out to Mongolia, I didn't speak Chinese for weeks, but I was looking after 800 Chinese contractors, 800 Chinese people. And the only person that knew I spoke Chinese was the lead guy in the Chinese company. And I told him on the first day, we had a private conversation. I knew a lot of things I'd been told, and I went and told him, I was straight up front with him, this is what we believe. It mightn't be true, it might be true, but this is what we're led to believe, and I need to fix it. And that actually, having a private conversation with him, gave him time to sort it out without it all becoming inflamed. So again, it's just a management style. You don't go in with a big stick. You don't put things under the carpet because they're just bumps in the road later on. You've got to have a clear playing field. You've got to be transparent about what you do. And transparency is everything. And unfortunately, when you have a joint venture, it's almost impossible to be transparent unless you have the right people and the right culture in place. So we used to say, and I come up with this saying in China with the consulate in Guangzhou and a very good friend, Bob Sheed, who was the commercial guy. And we used to say, a joint venture exists on paper and in people's head. A joint misadventure is what you get. And a joint venture is what you organise, a joint adventure is what you get, and a misadventure is what you had. Because when you start a joint venture, everybody wants something different out of it. And somebody, unfortunately, has got to be the leader. A joint venture of 49-51, 50-50 never works. Because you're both putting the same amount of money in, and the other person has got the one with the most shares. It might be one share, might be two shares, has got to lead it. And that will never work. Your joint venture has got to be positive, managed,
and that means it's got to be 65-70% one party. Therefore, you can have leadership, and that's the way it goes. If it goes down, if it doesn't work, one party's to blame, and if not, there's a squabble. But going into business, like all business plans, you really need to put the business plan together and have how you're going to sort out conflict. Because conflict in a joint venture or in a foreign country is really difficult. So you've got to have a process, and if you have a joint venture, how you're going to wind it up. Because if you've got a joint venture, say in China or Russia or anywhere else, you're going to help that company, you're going to put your life and soul into it, because that's what you said you're going to do. Yeah, in the dream, you want to work together. But in 15 years' time, the life of that joint venture, who owns the shares? Who owns that market? Who owns that brand? All this has got to come out before you join together. So it's not an easy thing setting up a joint venture or setting up a structure in another country. So we've talked again. I'm in Mongolia. I hope to see you again. So here's me signing off, and I hope you have an enjoyable day. Thank you. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra.
Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody's going to help them. So that was the inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you'd not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, it just can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances. If we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project.
Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government who went there and said, you know, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service. And today, the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today, they are able to reach the most difficult areas, the most difficult, narrow streets, even in traffic congestion, they're able to respond to emergencies. They immediately go, they're all trained staff. In 2005, we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people. And immediately, 1 year after that, we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team. And we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today, we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. Then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000 fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized a service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years.
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
इंटरेस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती, आपका मंशूर क्या है। किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें।
12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, PIA निजकारी और उसके बाद अब बारी है रेलवे की, इसको भी निजकारी करने जा रहे हैं। और रेलवे का जो मजदूर है वो बेचारा कहाँ पे जाएगा। मुल्क में पहले ही इतनी बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं और लोग मर रहे हैं। जब ये इदारा ही बंद हो जाएगा और प्राइवेट हो जाएगा तो जितने भी मजदूर हैं सरकारी वो उनको निकाला जाएगा, तो वो मजदूर बेचारा कहाँ पे जाएगा। आज इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद PIA के ऊपर भी बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी महमूदुल अहद, सदर रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप पाकिस्तान। ये लीड कर रहे हैं रेलवे को और पाकिस्तान के जितने भी मजदूर हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो जो मजदूर की जो सैलरी है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जी 32,000 से 37,000 रुपये जो मजदूर की सैलरी वो दी जाएगी, मगर वो भी जो नारा था और जो ऐलान था मगर अपनी महदूद लिमिट में रह चुका है, बढ़ाई नहीं गई सैलरी। इसके ऊपर बात करेंगे आज कि अब जो मजदूर है किस हाल में है और जो मजदूर की सैलरी जो 32 से 37,000 की थी, क्या वो उन मजदूरों तक सैलरी पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, क्या वजह है। चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, आप मजदूरों की आवाज़ बनते हैं और हर फोरम पे ऊपर आप खड़े होते हैं, मजदूरों के साथ खड़े होते हैं। PIA के बाद, स्कूलों के बाद अब बारी है पाकिस्तान रेलवे की, जो एक पहिया चलता है और गरीब सफ़र करता है उसके ऊपर। अब वो भी गरीब से छीना जा रहा है, तो गरीब बेचारा कैसे सफ़र करेगा। एहसन भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि रेलवे एक कौमी अदारा है, रेलवे एक रफाही अदारा है, अवाम की सहूलत के लिए एक अदारा है और इसके साथ साथ ये एक दिफाई अदारा है। फौज की सारी जो सहूलतकारी है वो रेलवे करता है, इसलिए ये एक अपनी अहमियत का एक हामिल अदारा है। लेकिन हुकूमत वर्ल्ड बैंक, IMF के एजेंडे को इस मुल्क में नाफिज करना चाहती है और उसी के तहत ये इसको प्राइवेट करने जा रही है। तो सर, ये ऐलान हो चुका है और इसके ऊपर अमल कब होगा। अब देखें, अमल तो इस पे नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही कोशिश और ख्वाहिश होगी कि इस पे अमल ना हो, हुकूमत इस सोच और ख्वाहिश से बाहर आए। लेकिन ये हुक्मरान जो है गैर महसूस अंदाज से अपने एजेंडे को मुकम्मल करते हैं। पिछले एक तवील अरसे से ये आए दिन गाड़ियों को प्राइवेट कर रहे हैं और प्राइवेट मालकान के हवाले वो गाड़ियां कर रहे हैं। जो रेलवे की वर्कशॉप्स हैं उनको भी प्राइवेट करने और उन्हें जो है ना प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए वो कोई ना कोई आए दिन मनसूबाबंदी बनाते रहते हैं, उस पर फिजिबिलिटी बनाते रहते हैं, उस पर विजिट करते रहते हैं, ताकि किसी वक्त भी ये सारा कुछ वो अपने पाया तकमील तक। तो सब ये वजह क्या बनी आखिरकार? कोई तो वजह होगी ना कि इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, क्यों प्राइवेट करना चाह रहे हैं इसको? देखें, ये रेलवे को वजह तो अभी हम इसमें तलाश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर पिछले 40-50 साल में देखें तो यहाँ पे 1 लाख से जायद, 1.25 लाख से जायद मुलाजम थे और आज यहाँ 60,000 भी नहीं है। 1.25 लाख से 60,000 तक पहुंच चुके हैं, यानी मुलाजमीन की तादाद आधी से भी कम रह गई है, जबकि अफसरान की जो तादाद है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी कि ये एक खराबी का सबब ये कह लें। दूसरा, ये जो जितनी रेल की इंतजामिया है और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने रेल को बेहतर करने के लिए कभी प्लान ही नहीं किया। कभी इसको जो है ना मुनाफे में ले जाने के लिए या इसकी जो खराबियां उसको दूर करने के लिए इस पे प्लान ही नहीं किया और इसीलिए ये दिन ब दिन जो है ना खसारे की तरफ जाता गया। हालांकि अब इस वक्त जो रेल इंतजामिया दावा कर रही है कि हमने 1 साल में 55 अरब रुपया कमाया है। 55 अरब रुपए 1 साल में कमाया है। इन बुरे हालात में 55 अरब कमाया है, तो फिर इसको प्राइवेट करने का क्या जवाब है? देखे ना, अगर 55 अरब रुपए कमाया है, ठीक है, तो वो 55 अरब रुपए गया कहाँ पे है? वो गया कहाँ पे है? अगर ये कमाया है तो गया क्या है? रेल के मजदूर को क्या दिया है? ये अफसरशाही है। इनके अगर आप दफातर देखें, इनके अगर आप सहूलतें देखें, इनके अगर आप गाड़ियां देखें, इनके अगर आप अख्तियारात देखें, इनके अगर आप पेट्रोल और इनके घरों का स्टाइल देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेल को तबाह होने की वजह क्या है।
ये तो आपको तो इसको फिर कौन बचाएगा? कौन सी ऐसी यूनियन सामने आएगी? आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं, और आप लोग एहतजाज करेंगे, आगे आएंगे? देखें, हमारा तो ये बच्चों के फ्यूचर का मसला है। अगर ये अदारा बंद होता है तो आज भी तकरीबन 1 लाख के करीब खानदान इसके साथ वाबस्ता हैं। वो 1 लाख खानदान को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये को 8-10 लाख अफराद बन जाते हैं। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो पहले ही खराब हैं। लोगों की जिंदगी गुजारना एक मुश्किल बना हुआ है और ये बेरोजगारी का एक नया तूफान आएगा। इसलिए रेल का मजदूर तो इस पे जदोजहद करने के लिए, इस पे मजामत करने के लिए तैयार है। चौधरी साहब, एक तरफ से नारा लगाया जाता है कि गुर्बत को खत्म करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, दूसरी तरफ से ये आपके सामने है, रेलवे देख लें आप, अब वो निजकारी के धान पर पहुंच चुका है। वो ये हुकूमत जो है, मैं इसको क्या कहूँ, ये वैसे ही एक गैर कानूनी हुकूमत है। लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, किसी खास और महसूस तरीके से इसको इक़्तिदार तक लाया गया है। ये लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसलिए इसको लोगों की फिक्र नहीं है, आम आदमी की इनको फिक्र नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पे एक एजेंडा है जिसको वो लेके चल रहे हैं। ये रेलवे को भी प्राइवेट कर रहे हैं, PIA को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, यूनिटी स्टोर और इस तरह के एक नहीं दर्जनों महकमे हैं जिसको ये आस्ता आस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। कहने का मकसद आपका ये है कि लिस्ट बन चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े बड़े नाम हैं वो अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो दूसरे जो छोटे नाम है वो बाद में किए जाएंगे। ऐसे ये अमल जारी है, ये अमल जारी है। लाहौर में एक छोटा सा अदारा है पिटाक, उसमें चंद लोग हैं, उसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। वो एक टेक्निकल अदारा है, उसको प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? उसको आप बेहतर करें, उसको आप इंप्रूव करें, उसको आप प्रॉफिट में लाएं। तो ये एक अदारा है। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल अदारे प्राइवेट लोग बना रहे हैं, आप एक सरकारी अदारे को बंद करने जा रहे हैं। ये रेलवे की हम बात करते हैं कि जिसको बंद कर दें। पाकिस्तान में जिनके पास 2 बसें थी, 4 बसें थी, उन्होंने बड़े बड़े फ्लीट बना लिए हैं, जो ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, ट्रांसपोर्टर बन गए हैं। ये आप डेवो की मिसाल देख लें, चंद साल पहले इन्होंने इसका कारोबार शुरू किया था। एक रूट पे चंद बसें थी, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम रूट के ऊपर उनकी बसें चल रही हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है कि जो है ना रेल तरक्की नहीं कर सकी, रेल बेहतर नहीं हो सकी? पूरी दुनिया के साथ इसका मुआवजा करें, दूर ना जाए, इंडिया को देखें, वहां यहाँ चंद ट्रेनें चल रही हैं, वहां सैकड़ों ट्रेनें चल रही हैं। ये खसारे में है, वो प्रॉफिट में है। तो अभी तक साहब कितनी ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं लाहौर से? अभी चंद ट्रेनें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूं कि जो रेल की इंतजामिया है, जो बड़े बड़े दफातर में बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी सहूलतें लेके बैठे हैं, ये उनकी नाकस पॉलिसी की वजह से। आप लोग उनके ऑफिस का घेराव करेंगे? देखें, जब ये नौबत आएगी तो रेल का मजदूर उठ खड़ा होगा, तो फिर ना इनके दफातर बचेंगे, ना इनके इख्तियारात बचेंगे, ना इनकी सहूलतें बचेंगी। इंशाल्लाह ताला ये हालात आगे बनने जा रहे हैं। तो रेलवे मुलाजमीन कितने हैं इस टाइम जो मजदूर काम कर रहे हैं अंदर? कितने हजार की तादाद? इस वक्त तकरीबन को 58-60 हजार के करीब इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इनकी तादाद है जो पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यानी कि आप लोगों की कैंपेन अब जारी है, ऐसे ही है? कैंपेन क्या जारी है? लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर जो है ना बिल्कुल जो है ना वो परेशानी का इजहार पाया जाता है। लोग बेचैन हैं, लोग समझते हैं कि हमारा क्या बनेगा अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाता है या किसी कंपनी के हवाले कर दिया जाता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा, हमारी नौकरियों का क्या बनेगा, हमारे खानदानों का क्या बनेगा। तो इसलिए लोगों के अंदर जब बेचैनी पाई जाए और लोग परेशान हो तो फिर उठ खड़े होते हैं और वो एक बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक बंदा रिटायरमेंट के करीब है, अगर इदारा जो है प्राइवेट हो जाएगा तो उसकी रिटायरमेंट तो गई, फिर सारा कुछ गया, पेंशन भी गई, रिटायरमेंट भी गई, उसका पेंशन भी गई, उसका जो भी इस वक्त टूटी फूटी उसको रहायश मिली हुई है वो भी उससे गई। वो कहाँ जाएगा? उसको कई लिहाज से परेशानियां जो है ना उसको घेरे हुए हैं। और उसके बाद जो है ना जितनी तनख्वाह भी है इस वक्त, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं हसन भाई कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों में सबसे कम तनख्वाह अगर है तो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन की है। नहीं देखे ना जो साहब, अब आपके वुज़रा देख लें, पंजाब असम्बली के देख लें, आप कौमी असम्बली के देख लें, जिनकी तनख्वाहें लाखों में थी, यानी कि 2 लाख 3 लाख, अब लाखों रुपए बढ़ा दिए गए, 5 लाख तक गेम पहुंच चुकी है इस टाइम।
तो वो कहते हैं अभी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अभी किसी से आप पूछ लें, मुशीर से पूछ लें या MPA और MNA से पूछ लें, तो वो कहते हैं यार बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और इनकी मेहरबानी है जो लाखों में इजाफा किया है। जो एक मजदूर की सैलरी थी 32,000 और ऐलान हुआ था कि जी 37,000 रुपए इनको दी जाएगी उजरत जो है महीना की, तो वो तभी इनको मिल रही है कि नहीं मिल रही पूरी 37,000? ये भी आपने जिस अरकान असम्बली के तनख्वाह में इजाफे का जिक्र किया है, ये एक रियासत और दो कानून हैं। एक तरफ उनका जो गुजारा 1 लाख में नहीं हो रहा, वो 4 लाख की तरफ चले गए हैं। जो वजीर की तनख्वाह 1 लाख थी, वो 9 लाख की तरफ चले गए हैं। दूसरी तरफ जो आप कम से कम तनख्वाह है वो 37,000 है। ठीक है चौधरी साहब, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। It's me, Jia. This is my Street Vibes. Hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर।